Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Hope everyone is doing good. कैसे हैं आप लोग? जो भी डाउट्स है पूछ लेना. We'll start the streaming in 2 minutes. Cool. Good morning, Zairji. Jai Shri Krishna Ramesh. Good morning, Varun. Good morning, Sudhir. How is your executions going on? Good morning, Suresh ji. कैसे हो आप? So let's start with yesterday's point of view. कहाँ पे close किए थे हमने? At this range, right? We were clearly waiting that we needed one drop. We had got that one drop. Why? Because there was no clear completion on the movement's allocation perspective, right? जब movement allocation perspective नहीं था तो हमारे पास यहाँ पे क्या develop हुई थी? Liquidity grab range, उसके साथ intact levels, and there was an entire movement without an intact conversion which was in the direction, right? इस point of action में हमेशा एक चीज याद रखना होता है. What is that? Volume. Excuse me. Right? Coming to this point of view, what did we notice? Market में एक strong bullish से bearish movement आई एक कैंडल पे डेवलपमेंट, राइट? इस डेवलपमेंट के साथ क्या हमारा आइसबर्ग ऑर्डर एंड वॉल्यूम में चेंज हुआ? नहीं हुआ, right? When there is no change in volume, what will market tend to do? Come to the nearest intact level, complete the intact liquidity grab. With the liquidity grab, continuity in the movement. क्यों इसी पॉइंट ऑफ एक्शन से कंटिन्यू हुआ? दिस वाज द नियरेस्ट लिक्विडिटी ग्रैब एंड हाई वॉल्यूम डेवलपमेंट में नहीं थी. जब मार्केट हाई वॉल्यूम डेवलपमेंट में नहीं रहती है, देन हमेशा याद रखना मार्केट उसका नीचे वाला लिक्विडिटी ग्रैब पॉइंट को नहीं लेगा, राइट? व्हेन विल दैट हैपन? व्हेन देयर इज ए हाई इंक्रीज इन वॉल्यूम, राइट? यहाँ पे हमारे को क्या दिखने को मिला? इंक्रीज हुआ वॉल्यूम? नहीं हुआ. सो द नियरेस्ट इंटैक्ट लेवल के साथ 1 आवर में कंटिन्यूटी इन द मूवमेंट, राइट? विद दैट, what are the next things that we'll be following? Coming to the point, कंटिन्यूटी में तो दिखने को मिली मार्केट में मूवमेंट. डायरेक्शन है, आइसबर्ग ऑर्डर का रेंज है, उसके साथ इन कंटिन्यूएंस व्हाट आर द फर्स्ट प्रोटेजी ऑफ दिस अलोकेशन? दिस पॉइंट, राइट? बिकॉज नियरेस्ट इंटैक्ट लेवल का फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये पॉइंट था, इसी के साथ मूवमेंट डेवलप हुई थी. देन वी अलॉटेड विद द नेक्स्ट लेवल ऑफ अलोकेशन. Break and continue. When there is a break and continue of the surplus movement, what do we mark? We mark a structure stability. When the structure stability is marked, what are the major things that we'll be looking over here? The major flaunt through will be taken in consideration of the previous points, right? So previous point के हिसाब से allocation के साथ what did market tend to do? Market develop a structural movement. इस स्ट्रक्चरल मूवमेंट को अलोकेशन 15 मिनट्स के हिसाब से लेके चलेंगे. क्या हमारे पास यहाँ पे री अलॉटिंग पॉइंट है? नहीं है.
right? First come first serve का allocation ये लेंगे या ये लेंगे, right? This will be our first come first serve, right? जो कि hit and continue था. This is second serve. Second serve भी hit and continue होता है. Then we come to 1 hour, right? In 1 hour allocation, what is the major point of invigilance that we'll be working over here to allocate the structure? The allocation of the structure should always be in preservance of the previous movement, right? So हमारा first come first serve कौन सा होगा? क्योंकि 1 hour का supply mapping होगा, तो the movement will be taken in consideration of this first come first, right? Map it. High wick range है, तो कहाँ से map होगा? Wick से, right? Then break and continue 200 points, right? So जैसे ही 200% allocation हुई, what are the next fundamental movements that we'll be looking for? Do we have a high volume? Yes. Come to 1 hour, check at that point of action, do we had the movement? Yes. Right? What do you notice? Iceberg range ka highest candle formation. Matlab, market is going to continue again in the same direction till the nearest target point. Right? So जैसे ही हमारा 1 hour का वो allocation point develop होते हुए दिखी, what are the next steps that we'll be looking for? Reallocation of the structure. Reallocation of the structure में क्या आप directly entry लोगे? नहीं. You will wait for the setup, right? So in this parameter, candle to news का है, right? But where will be the considerational point will be taken from? Short के लिए intact level के साथ फिर से short किया, right? Setup create हुई थी with that formation. If we go and look into the preservance, that is exactly 150% target. Why? Because this is the point one with the point one allocation of second minimality M1 created 150% target, right? So with 150% target, what are the next steps? यहाँ पे आपको सेकेंड कंफर्मेशनल पॉइंट डेवलप होते हुए दिखी. इस डेवलपमेंट पॉइंट के साथ यू कुड हैव एग्जीक्यूटेड द ट्रेड विद S2B1 ओवर हियर, और 3 विंग सेटअप का एग्जीक्यूशन इस रेड कैंडल में होगी, right? Once this execution is done, what are the next steps of action plan that needs to be taken under the consideration, right? So post completion of 150, the next plan of execution should be always in preservance of what is the level of movement that is being created in the market, right? So with this plan of action, this will act as my supply, right? The entire movement, first come first serve के हिसाब से. Allocation will be in perspective of the movement with the high wick range, minimality M1 created. M1 के साथ, what do? We had 100% rejection and then continuity towards 200, right? So keeping in mind, यहाँ पे market अगर notice कर रहे हो तो नीचे के लिए आया. Why? Because there was an intact level point one and there was a liquidity creational zone which is high calibration point. With the high calibration point, market took a reverse, right? So in this scenario, M2 का sorry M1 200% का target क्या first directly hit होगा? नहीं. First target हमेशा hit होता है 150% का. In this preservance, what do we notice? 150 ka target post taking the liquidity, again formation of the movement of S2B1 and then continue, right? Why did the market come down again to take the hunt? Because there was a major liquidity graphs point which created a alloy moment. Sorry, uska word bhul gaya. Alloy moment ka there is one more word, right? So I'll get back to you on that very soon, right? So alloy movement के साथ continuity. With the continuity, this was New York PM session. However, there will be no trade-off execution which will be taken at this point of action point. So what we do, we start mapping the new structure. Do we have a change of character in this play? No. आज का दिन का trade off execution point कहाँ पे थी first? This was the first trade off execution point what we had. With that, the second trade off execution point was at this point.
right? Keeping in mind there is still a liquidity grab pending below, means market is definitely going to come down very soon to this point to grab it. With this allocation, how do we look for the next point of supply? Supply 1, which will be mapped next to the retracement. With the retracement, do we have a change of character here? No, not yet. So on the break, we had a change of character. When there is a change of character, conversion will be from supply converted into demand. यहाँ पे supply retracement कहाँ पे है? Supply retracement is taken in pursuance of this movement, right? So this will be acting as our current demand, right? So conversion was done, execution with the same point of 100% break and continue. With the break and continue, what do we notice? M2 formation. With M2 formation, target is 200%. जो कि at the current range market rejection ले रही है, right? जब तक high volume formation नहीं होता है, what is the next plan that we'll be working on? The next plan we'll be working on is in the directional movement. In the directional movement, what do we have to notice? This is for the swing traders. Jab tak candle formation isn't in pursuance of the direction, we will look for 1 hour allocation with 15 minutes. Right? With this, what are the major point of actions that we'll be following at this point? Action point number 1 will be taken under the consideration of this move. This is for the swing traders, right? So with this, what do we notice? There is a 100% rejection. With the 100% rejection, what we'll be doing, we'll be looking for an allocation perspective on the break and continue for the next targets of 4268. Any doubts in gold, guys? Completed all videos, started back testing. Great. सर कल का दिन अच्छा था एग्जीक्यूशन पार्ट पर आपकी सपोर्ट एंड गाइडेंस से अच्छा मूवमेंट कैप्चर ग्रेट रमेश जी कीप इट अप गुड मॉर्निंग आर्या busy with some office stuff will check analysis later no worries किसी को भी कोई डाउट्स है प्लीज डू आस्क बीटीसी करंट रेट हमारा लॉन्ग चल रहा है बता रहा हूँ कि गोल्ड होने के बाद स्विंग ट्रेड में शॉर्ट है हाँ आईडी में लो किसी को भी कोई डाउट्स है पूछ लो First, complete understanding of supply demand, then complete understanding of minimality, then complete understanding of
Surplus, then complete understanding of volume, then we'll come to liquidity high calibration point. Ramesh ji and Suresh ji, right? And जिन जिन को भी in detail में चाहिए liquidity calibration क्या होता है, please look into the point of chapter liquidity calibration which is mentioned and follow the same steps. Setup के हिसाब से this is the major liquidity calibration point. Why? Wherever in short में समझा देता हूँ सुरेश जी and रमेश जी, जहाँ पे भी आपको सेम लेंथ का कैंडल दिखने को मिले, वो एक ही सेटअप सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है? In this case we have this one, right? अगर रेड कैंडल बड़ा है एंड उसी के साथ ग्रीन कैंडल भी सेम स्ट्रक्चर में क्लोज अप हुआ है, राइट? जो भी सेकंड कैंडल का मूवमेंट अलोकेशन होगा उसका हाई पॉइंट से 2 times the movement will be your allocation. Just for an example, if this is your movement of high calibration, the execution will be also of the same. If you notice, we have an exact rejection point from the same range. That is liquidity calibration. Okay, this is sweet and simple. We are not going to accelerate it more. Good morning, Ashnar. कैसे हो? How was your trip? ये बाली में क्या रखा है यार? स्मिता मैम भी रिसेंटली जाके आए। 3 months of backtesting done, sir. Have realized it's easier for me to map in 1 hour and find executions in 15 minutes, and also sometimes it locks my mind that how accurate this concept is. Crazy. Thank you so much, Arya. Keep learning and keep growing. Only thing what I could suggest is execution perspective में setup follow करिए. Analysis slow and steadily develop हो जाएगी, but जैसे ही आप execution perspective में आ गए ना, rest all is like cup of tea. Rejoy movement में आ जाना सब लोग. अगस्त्य, वरुण, हर्षित, हेमंत, महेश गौड़ा. Ravi, your analysis is entirely wrong. Please work on it. वो गेम खेल रहा है बंदा. हाँ, PS5 में गेम खेल रहा है, मेरे को इधर दिख रहा है. वो वीडियो भी ऑफ नहीं किया है. अभी हंस के बंद करने से क्या होता? हाँ, MTSL फॉलो करो रवि. System trailing will be at 4200. MTSL will be at 4220. Yeah, 4268 is the next target.
Yes, sir. I keep rewatching your videos in past life. If were any difficulty arises, thanks you. Thank you. You're welcome, Mario. सच में आप लोगों को डाउट नहीं आता है? कैसे हो यार आप लोग? Sir, what is the full form of B1 and B2? फैजा 5 मिनट का चार्ट में क्यों है यार तू? 5 मिनट है ना? सॉरी सॉरी माय बैड. 15 मिनट. मेरे को सिर्फ 5 दिखा. बाजू वाला 1 नहीं. 300 पॉइंट गैप अप ओपन हो रहा है तो मैं क्या करूँ? मैं दिवाली तक वो मार्केट भी नहीं देखी. लो. What you want? Analysis. Banknifty. Point one. Second allocation. M2 formation. Target 200. Break and continue. Allocation of surplus 150% कहाँ पे है? 150% to the allocation point. Retracement S2B1 के साथ closure point अगर इसके ऊपर sustain होता है then fill up candle closure. ठीक है? Same with Nifty. डेफिनेटली बैंक निफ्टी में फिलअप होगा वो. ओके. डबल कर लो उसे. अलोकेशन 1. पूरा नहीं लिया. 1. Redevelopment formation 2. 100% rejection. With 100% rejection, reavail the movement of gap up and gap down. Stabilized movement from the nearest retracement. M2 formation. Target is 200%. Currently standing at 150. On the rejoin moment, M2 है तो 200% कट. Okay. Why do you make it look so easy? 8 साल से सेम ही चीज करके आ रहा हूँ. Sir, your analysis is doubtless. I clear mistakes in my mapping with this live session. Great. ZG, keep it up. US oil बता दो. हर्षिनी आखी गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून नहीं, गुड नाइट नहीं. US oil बता दो. कंटिन्यू करो ट्रेड. MTSL 62.5. एग्जीक्यूशन पर्सपेक्टिव 63 से ड्रॉप करके 63.1 पे रख लेना सिस्टम ट्रेडिंग. ओके. रिजॉय मूवमेंट 200% कंप्लीशन. 200% कंप्लीशन मतलब रीडेवलपमेंट स्ट्रक्चर अलॉट करो ऑफ सरप्लस. 150% तक की रिजेक्शन.
nearest accumulative point. Again, surplus 100% rejection confirmed. With that, minimality M1 formed. With minimality M1 formed, drop point. With the drop point, allot a segregation point. Okay. ये थ्री मंथ्स और कैरी फॉरवर्ड में रखो इसे. ठीक है अर्शनी. First come first serve. Moment allocation will be taken from this perspective. Reallocate the structure through the assembly point. 100% rejection. With the 100% rejection, continuity in the movement. Continuity in the movement may drop through point. Drop through point is taken first come first serve. Break and continue. With the break and continue, second serving is taken in perspective of this range. High execution point, break and continue again. 2% rejection. थोड़ा सा पेंडिंग है. Okay. Thank you so much. क्या है वो? सुबह सुबह फ्लर्ट करने के मूड में नहीं हूँ मैं हर्षिनी. चुपचाप ट्रेड एग्जीक्यूट करो. राइट. गोल्ड में और एक एग्जीक्यूशन पॉइंट मिलने वाला है. उस एग्जीक्यूशन पॉइंट के साथ रीस्टेबलाइज मूवमेंट को अलोकेट करके चलना. नहीं अगस्त्य, रुक जा. सेग्रीगेशन पॉइंट अलोकेट करो. ओके. मैप करो उसको एलजी के साथ, रिसेंट एलजी के साथ. राइट. वहां पे लगाओ, उससे पहले नहीं. एनीवन, एनी डाउट्स? 98 में चल रहा है ना. चलना है. कितने में चल रहा है? 98.666 था मेरे हिसाब से. सही है. वन परसेंट ड्रॉप है. राइट. मतलब स्टेबलाइज्ड मूवमेंट में गोल्ड हमको 2% तक देगा आज भी, जो हमें चाहिए नहीं. शाम के लिए एक अच्छा खासा ट्रेड मिलने वाला है. रेडी रहो. 500 में. राइट. रीस्टेबलाइज्ड मूवमेंट, अलोकेशन स्ट्रक्चर ब्रेक करके, राइट, रीडेवलपमेंट प्रोसेस में अलॉट करना. ठीक है. फॉर्मेशन ऑफ लुकआउट 1 2 3. स्विंग लो, रिट्रेसमेंट, सॉरी स्विंग लो, स्विंग हाई एंड रिट्रेसमेंट के साथ.
गुड मॉर्निंग श्राव्या, कैसे हो? गैस किसी को भी कोई भी डाउट है, प्लीज टू आस्क. How did you map the US also first? Through this tool. Sir, in three-wing setup, second or third candle if forms small wick, can we consider it as three-wing setup? Suresh ji, if the three-wing setup is formed, it should be with the three-wing, right? If there is two-wing and the third wing is small and it's with the intact, then you can call it as S2B1 setup. Wow, I didn't know that, sir. Great, you came to know that. वरुण, तुम्हारा MTSL कहाँ पे है यार? क्या कर रहे हो? सिस्टम ट्रेलिंग आपने 117 सॉरी 4176 में क्यों रखा है? मूव करो उसे ऊपर 4204 पे. बट अगस्त्या को आपने बोला था 4200. ठीक है, 40 पिप्स में आप क्या कर लोगे बोलो? रमेश रामपुरम, सर गोल्ड विल मूव अप टू 4250 as per 150%, right? रिवाइंड करके देख लो, नंबर आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड, कहाँ तक जाएगा? Why do you guys delete it? Done. Change the MTSL and STSL. Great. पोजिशनल एलोकेशन लेके चलो ना. हाँ, रीडेवलपमेंट जो है इसके साथ. परफेक्ट. गुड मॉर्निंग राजीव, हाउ आर यू? He's the same guy, right, who is there in the group? Yes, yes.
How are you? Long time. Good, sir. Thanks. How are you? Yes. I still have that question, Rajiv. How did you get into that group? Because आपके बारे में बहुत चर्चे है. नहीं यार, ये फॉर्मेशन मेरे को नहीं चाहिए. वेरी बैड फॉर्मेशन. गाइस, सिल्वर में जितने भी लोग हैं, बबल कैंडल क्रिएट हो चुकी है. बी वेरी केयरफुल. Retracement is anywhere somewhere around 10% to 800. Oh, you are in that group. Okay, got it. वो तो deactivate हो चुका. But trade तो नहीं कर रहे हो ना. So हर्षिता को मैसेज करो वर्षा. बबल कैंडल फॉर्म हुआ है. 10 to 12% ड्रॉप मिलने का चांसेस बहुत है. ओके, वेरी सून. चलो चलो. दिस इज चीटिंग. मैं कुछ नहीं कर सकता वरुण यहाँ पे. अगर इतना क्लियरली मूवमेंट ऊपर के लिए जा रहा है तो मैं लूंगा ही नहीं एड ऑन. I need it at a premium price. डायरेक्ट 28 तक ब्रेक देना है इसे. तब मजा आएगा. वहां पे जाके सेटअप फॉर्म होने दो. इंटैक्ट रिजेक्शन. हम्म. मान के चलो. आइसबर्ग जोन में ही है ना अभी तक. ये पूरा कन्वर्ट होगा ग्रीन में.
28 के पास आएगा. Yes. अंदर. किसी का जान जान में आ गई वापस. Good morning, Arundhati ma'am. You are too early to the session. तुम कितना भी कुछ भी कर लो 28 तक आना चाहिए. फर्स्ट प्रीमियम प्राइस, उसके बाद लिक्विडिटी ग्राफ पॉइंट. सर कैन वी लुक फॉर एन किसको पूछ रहे हो यार? उस्ताद से उस्तादी. Sir, are the significance of long wick creation in iceberg zone or low volume zone? What are the significance? Step by step आ गया. It's trapping retailers. Short form में जानना चाहते हो? Beautiful analysis, मैम. बट आपका एग्जीक्यूशन गलत पॉइंट में हुआ. ट्वेंटी एट तक आने दो, लॉन्ग के लिए देखना है, उससे पहले नहीं. आप बोले इसी कैंडल में ऊपर जाएगा, 1 आवर का है. चलो चलो. Yes, RDL moments. The craziest part is everyone will go short over here. वहां से सबका liquidity लेके continuity, then one more drop should come. That's when the fun is. अगर यहाँ से ही डायरेक्ट जाता है, समझ लो कि ये ट्रैप होने वाला है. 28 लिक्विडिटी हंट होना ही है. कुछ भी कर लो, 28 लिक्विडिटी हंट चाहिए मुझे. Some fun are meant to be captured, right?
आप उस्ताद से पूछ रहे थे इतना जल्दी है सवाल को कैसे मैप किया, इसलिए मैं पूछा उस्ताद से उस्ताद। Come to Banaras, still in the iceberg zone. Where is the nearest intact point? The nearest intact point is at 28, and then directly liquidity grab candle, which has no wick. जो कि liquidity calibration point है. सर एक मैसेज आया ग्रुप में, क्लोज रिमेनिंग 20% ऑफ ऑल द स्विंग ट्रेड्स. किसने मैसेज किया? आप तो लाइव पे हो. टीटीएस अकेला का थोड़ी है. देयर इज एन एंटायर टीम हु इज वर्किंग ऑन. हम चले बाहर पे कंगना तेरा. रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा. थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा. बट जिंदगी का एक ही उसूल है. पूरा मैट्रिक्स आप लोगों को स्लो एंड स्टडी विंस द रेस के झंझट में फंसा दिया है. एक चीज समझाओ आप फैजा. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस सिनेरियो होता, राइट, देन हल्दीराम्स हल्दीराम्स होता, जोमैटो जोमैटो होता, राइट. सेम फॉर्मुलेशन के हिसाब से फोर्ड, जो कि जैगुआर फोर्ड का था, वो टाटा के पास क्यों आया? बिकॉज फोर्ड वॉज फॉलोइंग अ सिंपल रूल ऑफ स्लो एंड स्टडी. बट when it came to Tata, it was looking for the growth. So जो भी इंसान या कंपनी 1% ज्यादा काम करता है किसी और से, वो ही आगे निकलेगा. ब्यूटीफुल, एज एक्सपेक्टेड. Okay, so keep in mind, slow and steady wins the race was a myth.
140 pips running. Okay. 8 मिनट है guys. Only 8 minutes for 1 hour candle closure. जिस लेवल पे हमें चाहिए था उस लेवल पे मार्केट आ चुका है. इधर से पूरा कन्वर्जन ऑफ द कैंडल. देन द फन बिगिंस. सर इसलिए हम लोग आपके लाइव सेशन के दीवाने हैं. ये सेशन हमारी लाइफ में है. धन्यवाद all the members. Thank you for watching the stream. Thank you for taking the initiative to develop the new skill in the new line of business. Thank you so much, everyone. Thank you. Guys, stream will be there for next 10 minutes. जो भी doubts है, please do ask. सर आप BTC बताते ही नहीं हो. BTC में हाथ जलाने से अच्छा है गोल्ड में रोटियां सेक लो. भाई सब टॉन्ट मार दिया. टॉन्ट नहीं मारो, सच बोल रहा हूँ, हकीकत. स्विंग ट्रेड में हो ना आप लोगों को आईडी क्यों चाहिए बीटीसी में, मेरे को वो समझाओ. आईडी इधर करो ना. अच्छा खासा 150 पिप्स मिल रहा है स्विंग ट्रेड में. उसके साथ नाइस फ्लो ऑफ मूवमेंट में 3800 पिप्स चल रही है. गोल्ड में हाथ जला, सॉरी बीटीसी में हाथ जलाने से अच्छा है गोल्ड में रोटियां से. और भाई कॉमेडी था, सीरियसली मत लो. ठीक है. बहुत जल्द ऐसा दिन आएगा कि हम आईडी बीटीसी में कर रहे होंगे एंड स्विंग गोल्ड में होगी. ओके. एंड जितने भी लोग छुपा रुस्तम है ना यूट्यूब में, राइट, आप लोगों को डाउट आता ही नहीं है ना. ग्रेट. 38 members are watching this stream. In that only 11 are active. अब क्या बोलूं मैं. In that 11 only few ask doubts. गाइस जल्दी जाओ, यूट्यूब में दिवाली सेल्स ऑफर चल रहा है. हर एक ट्रेडिंग अकाउंट में, हर एक ट्रेडिंग इसमें
कोर्स एट 50% डिस्काउंट, कोर्स एट 30% डिस्काउंट, कोर्स एट 40% डिस्काउंट. जल्दी जल्दी खरीदो and waste the money like the bomb. Duh. सर कुछ लोगों को नखरे अच्छे लगते हैं, स्वर्ग की मजे से बोर हो गए. ओके, तो सेक लो आप भी हाथ में. कल एक मेंबर ने वीडियो बना के भेजा. हर एक जो है, जितने लोग सिखाते हैं, राइट. कोई डिफेंडर के ऊपर बैठ के कोर्स बेच रहा है दिवाली ऑफर के साथ, कोई फेरारी में बैठ के कोर्स बेच रहा है. भाई देख के इतना हंसी आ रहा था ना. बट या पेट है उनका. एक चीज बता देता हूँ, क्लियर कर लो. 5 मिनट एक्स्ट्रा होगा तो भी चलेगा. दैट 5 minutes विल बी वर्थ योर टाइम. फर्स्ट, इंडिया में जितने भी लोग हैं उसमें से 85% ऑफ द पीपल बाय आईफोन ऑन EMIs, राइट. 79% of the people buy their cars on EMIs, and 93% of the entire Indian population will buy their house in EMIs. In EMIs, there are two variants. Variant 1, which is called as liabilities. Variant 2, which is called as asset, right? EMIs are converted not on the first game. EMIs are good in the second role of play, where the first game of action plan is taken under the consideration, and that first asset is paying your entire EMI structure, and then whatever comes into your pocket is in your zone of action, right? So always remember, अगर आपके पास आपके अकाउंट में जो भी चीज खरीदना है उसका 3 गुना पैसा नहीं है, खरीदो मत. Simple and easy rule to protect your calmness and your wealth and develop the wealth, right? Example, आपको चाहिए 5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी. आपके पास 15 करोड़ अकाउंट में जब तक नहीं है, तब तक आप 5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी खरीदोगे ही नहीं. ठीक है. सेम सिनेरियो, अगर घर का खर्चा चल रहा है, it should be differentiated in 3 catalogs. How do you look into the perspective? जो भी हाउस अर्नर्स है and who are working, divide into 4 categories. जिनके पास बैंक अकाउंट्स एक या दो है और एक ओपन करा लो डिफरेंट अकाउंट में. सैलरीड अकाउंट से फर्स्ट जो आता है इनकम, वो जाएगा इन्वेस्टमेंट. This will be your bank account one, which this account you will never touch. Second account will be your EMIs account, where all your EMIs will get deducted through, and personal emergency fund will be kept in EMI account. And third account will be in pursuance of your daily usage and parties, food and all. This will be your last preference post investing, post EMI deduction. Then, whatever money comes into the play, in that a certain 20% will be used as monthly expenditures on groceries and lifestyle. Then comes the last part, which is enjoyment cycle. The enjoyment cycle is followed through with 5,000 rupees on a monthly basis. जिनका भी
जिन लोग भी कर सकते हो 5,000 का कर लो ये, राइट? सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान करके हाइब्रिड मॉडल है, रिसर्च ऑन दैट, राइट? मंथ ऑन मंथ invest 5,000 rupees, right? And every month there will be a withdrawal as well. With that, your corpus amount after 30 years will be of 1.8 crores, right? जो ऑफिस काम के लिए जाते हैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? So work on this. नहीं नहीं, सर वो डिफेंडर एंड फेरारी कोर्स फीस से नहीं है, ट्रेडिंग से नहीं। वो फेरारी और डिफेंडर जितने भी लोग दुबई से दिखा रहे हैं ना, वो सब रेंटेड है। ओ भाई साहब, बट आपका तो एक ट्रेड का खेल है। भाई मैं ऑफिस गोइंग पीपल वालों को बोल रहा हूँ, तो मेरे साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो? ओके, ऑल द न्यू मेंबर्स इन द स्ट्रीम, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, व्हाट यू गाइस हैव टू डू। जो भी स्ट्रेटजी, जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी आप कैलकुलेशन फॉर्मुलेशंस फॉलो कर रहे हो, उसमें से फर्स्ट चीज, इंडिकेटर्स को बंद करो। उस इंडिकेटर्स को बंद करने के बाद बैक टेस्ट करो, स्ट्रैटेजी वाइज वॉल्यूम का रख लो, प्रॉब्लम नहीं है। 6 months of back testing, 6 months of forward testing, 1 month of live analysis. With 1 month of live analysis, you will be coming to the next part, which is execution with this small amount. With the small amount, you'll capitalize the entire capital by compounding. Then you will follow a proper risk to reward to maintain your capital. With that, build the mindset which no one can break. How will you be doing that? Through meditation, through reading books. Patience is the only key in this business. Learn to wait in the markets to execute the trades at the right levels. Don't execute the trade at a wrong level, right? Remove FOMO, greed, and fear from your mind so that you can hold the trades patientfully and make sure that you gain this business the way you want it, because it's your hard earned money. जीतने से खुशी हो जाना, हारने से दुखी हो जाना is not a quality of the traders. So learn to wait while you execute. This is Nitesh signing off. मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।